Hello students. So now for today the concept is through a question. There's a concept. So बच्चों the question is what कि you have a pulley and through the pulley an ideal string is passing. At one end of the string there is a block M1. At the other end of the block there is a block M2. So here's the question. At one end there is a block M1. At the other end there is a block M2. And this pulley itself is being carried with extension A upwards. The pulley itself is being carried upwards with extension what A. मतलब जो pulley system है that itself is being carried upwards with extension A, and you have to calculate. You need to calculate what acceleration of M1 and M2. आपको M1 और M2 का acceleration calculate करना. So what is the concept here? You see, the concept is this. With respect to pulley, suppose M2 is greater than M1. If M2 is greater than M1, then with respect to pulley, the distance moved by M2 in the downward direction will be same as the distance moved by M1 in the upward direction. ठीक है? आप इस बात को समझ गए? पुली के रिलेटिव M2 जितना नीचे आएगा, पुली के रिलेटिव M1 उतना ही ऊपर जाएगा. ये मैं ग्राउंड के रिलेटिव नहीं बोल रहा हूँ, पुली के रिलेटिव. पुली के रिलेटिव और ये स्ट्रिंग X नीचे आएगी, तो पुली के रिलेटिव ये ब्लॉक X ऊपर जाएगा. इसका मतलब ये हुआ पुली के रिलेटिव acceleration of M1 and M2 will be what? C. Let's say that it is A1. ठीक है? या let's say it is A0. ठीक है? Let the acceleration of M1 and M2 with respect to pulley is A0. पुली के रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या है? A0 है M1 और M2 दोनों का. M2 का डाउनवर्ड्स और इसका अपवर्ड्स. किसके रिलेटिव? पुली. Now see, pulley is what kind of a frame? Pulley is a non-inertial frame. जिसके रिलेटिव आपने एक्सेलरेशन लिया है वो itself accelerate हो रहा है. So that means that is what? It's a non-inertial frame. So now we make the FBD of M2. आप M2 का FBD देखोगे, M2G downwards, tension T upwards, tension T what? Upwards, and pseudo force M2A down. Pseudo force कितना? Mass of the block into acceleration of the frame. और pseudo force का डायरेक्शन क्या होगा? Frame के acceleration के opposite. So M2A will be what? Downwards. Now this block is going down. ये block नीचे जा रहा है. ठीक है? अब मैं M1 का भी FBD यहाँ बता रहा हूँ. So आप M1 के FBD देखो. M1 के FBD में क्या होगा? M1G downwards, M1A downwards, M1AB downwards. Why M1A downwards? Because pseudo force इसके ऊपर भी किस ओर रहेगा? Downwards ही रहेगा pseudo force. है? Because frame ऊपर की ओर जा रहा है. और tension T इसके ऊपर भी क्या होगा? Upwards होगा. Tension T will be what? Upwards. Now see, now we make the equations. तो देखो equations क्या होंगे? Look at this. Equations will be for M2. This is M1 and this one M2. M2 का equation होगा M2Z plus M2A minus T equals to M2A0. You remember?
हमने दोनों ब्लॉक्स का एक्सटेंशन पुली के रिलेटिव क्या लिया ए नॉट एंड इफ यू रिमेंबर दैट आई हैव टोल्ड यू when you make the equation from the non-inertial frame in the left hand side of the equation write all the forces resultant net of all the forces including the pseudo force and on the right hand side mass m into a और a किसके रिलेटिव होगा उसी नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिलेटिव तो क्योंकि यहाँ पे पुली इज द नॉन इनर्शियल फ्रेम तो आपके पुली के रिलेटिव सो लुक एट दिस नाउ अब आप m1 के लिए इक्वेशन क्या होगा m1 के लिए होगा t माइनस m1 d माइनस m1 a equals to m1 a naught equals to what m1 a यहाँ पे दो unknowns हैं unknowns are what a naught is unknown which we had assumed t is unknown अब उसमें से t कैंसिल करते हैं पहले दोनों को ऐड किया तो अपॉन एडिशन we get what we get m2 g m2 g minus m1 g plus what m2 minus m1 into what a m2 minus m1 a equals to m1 plus m2 into a naught. So from here you get the value of what a naught. यहाँ से आपकी a naught की वैल्यू आ गई. A naught becomes what? A naught is equal to m2 minus m1 g plus a upon m1 plus m2. This is the value of what a naught. अब आप देखो जो a naught है वो एक्सेलरेशन है m1 का भी और m2 का भी किसके रिलेटिव पुली के रिलेटिव. अब आप ग्राउंड के रिलेटिव एक्सेलरेशन देखोगे ग्राउंड के रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ m1 है एक्सेलरेशन ऑफ m1 with respect to ground acceleration of a of m1 with respect to ground कितना होगा देखो ये पुली के रिलेटिव m1 a नॉट से ऊपर जा रहे हैं और पुली सेल्फ a से ऊपर जा रही है तो इसका आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ m1 with respect to ground will become a plus a and acceleration of m2 with respect to ground will be equal to अब डिपेंड करता कि a नॉट का मैग्नीट्यूड इज मोर और a का मैग्नीट्यूड इज जिसका भी मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर मतलब a नॉट और a when you solve a numerical problem so a नॉट a में से कोई एक बड़ा हो सकता है. मैं यहाँ पे लिखता हूँ it will be suppose मैंने माना कि a नॉट इज बिगर so this becomes a नॉट अगर बड़ा तो a नॉट नीचे है और a ऊपर है to be a नॉट minus a downwards. This will be what this will be upwards, right? और अगर a would have been bigger तो इसका भी क्या होता a minus a naught upwards. If the value of a had been bigger than a naught then it will be what a minus a naught and that will be what upwards. So students there's a concept for today. So the concept is what k when you see a pulley itself is accelerating, right? Then how to get the acceleration of m1 and m2? So the main point here was what you need to take the acceleration of m1 and m2 with respect to pulley which is going to be the same. Then make the ability of both the blocks with respect to pulley, consider the pseudo force, make the equation and get the value of what a naught, then get the value of acceleration of m1 and m2 with respect to ground. You can also find the value of t by keeping the value of a naught into one of the equation. When you keep the value of a naught in one of the equation, you will get the value of what t. So students, all right, this was the concept for today. So do it and there'll be many more kind of based upon the similar concept. There are many more problems which you can attempt now easy. All right, all the best students.